Hi everyone, welcome to today's episode of Regret After Having Kids, the hidden truth no one talks about. So, let me start with a question. Have you ever regretted something you thought was the best decision of your life? And what if that something was having kids? Sounds scandalous, right? I mean, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, तो आप उसको कैसे regret कर सकते हो? And society would rather set itself on fire than let a woman, especially an Indian mother, say that she regrets having kids. But let's break this down because it's not necessarily what you think it is. You love your kids, no doubt about that. But regret, that's an entirely different story. So आप अपने बच्चों को बेइंतहा प्यार कर सकते हैं और आप दुनिया के बेस्ट पेरेंट हो सकते हैं, मदर या फादर। लेकिन उसके साथ ये भी पॉसिबल है कि आप रिग्रेट कर सकते हैं कि ओके मुझे बच्चे नहीं करने चाहिए थे या इस टाइम नहीं करने चाहिए थे, मे बी आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट और मे बी आई डिड नॉट थिंक इट थ्रू। सो ये दो अलग चीजें होती हैं। लोग अपने बच्चों को बहुत प्यार कर सकते हैं, एट द सेम टाइम दे कैन फील रिग्रेट, एंड आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। सो दिस टैबू ऑफ रिग्रेट इन इंडिया, द कंसेप्ट ऑफ अ बैड मदर इज लिटरली द अल्टीमेट इंसल्ट। मतलब किसी औरत को आपको बेइज्जत करना है तो हाय तौबा कैसी माँ है, या हे भगवान ये कैसी औरत है, अच्छी माँ भी नहीं बन सकी। सो दिस इज सपोज टू बी लाइक द अल्टीमेट इंसल्ट। एंड एक औरत 99 सैक्रिफाइसेस कर सकती है, बट अगर वो एक हिंट भी दे दे कि शी इज फीलिंग ओवरवेल्म्ड या रिग्रेटफुल अबाउट हैविंग किड्स, तो ना सिर्फ द सोसाइटी, खुद की फैमिली, फ्रेंड्स, एवरीबडी इज जंपिंग ऑन टू जज हर। उनको बहुत जजमेंट का सामना करना पड़ता है। बट हेयर्स द ट्रूथ, it's entirely possible to love your children and still regret the life choices that you made that led to parenthood. तो आप अपने बच्चों को बहुत प्यार कर सकते हैं बट फिर भी रिग्रेट भी कर सकते हैं कि मे बी मुझे नहीं करने चाहिए थे। एंड गेस व्हाट, दैट्स नॉर्मल, इट्स ह्यूमन। बट इन अ सोसाइटी लाइक आवर्स, we bury these feelings under guilt and shame because good mothers don't regret, right? Well, we are wrong there. And आज हम वही डिस्कस करेंगे कि even good mothers, the best mothers and the best fathers can regret their decision of having kids. और इसके बारे में डिस्कस करने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स और एनालॉजीज डिस्कस करेंगे जो थोड़े से हो सकता है उटपटांग या अजीब लगे। दे आर स्लाइटली वियर्ड मे बी। सो लेट्स पुट इट दिस वे। इमेजिन आपने पूरा हफ्ता बहुत काम किया एंड यू डिसाइड कि ठीक है वीकेंड पे बहुत अच्छा वाला खाना बनाएंगे, एक लाविश मील वीकेंड पे बनाएंगे। दाल बाटी चूरमा, बिरयानी, गुलाब जामुन एंड ऑल दीज वर्क्स कि एकदम मस्त वाला खाना खाना है। आप पूरा हफ्ता प्लानिंग करते हो, इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करते हो, एंड देन सैटरडे मॉर्निंग को व्हेन यू वेक अप, आप ऑलरेडी थोड़ा स्लगिश फील कर रहे हो, यू आर नॉट सो मोटिवेटेड टू कुक, बट ठीक है आपने प्लान किया है सो यू स्टार्ट कुकिंग। बट हाफ वे थ्रू यू फील ओवरवेल्म्ड। आप स्वेट कर रहे हो, मे बी एक दो इंग्रेडिएंट्स भी मिसिंग है एंड पूरा प्रोसेस इज बिकमिंग वेरी chaotic एंड कई घंटे जा चुके हैं एंड अभी तक पूरा खाना बना भी नहीं है, बट यू आर ऑलरेडी हाफ वे थ्रू, so you cannot even just stop, so you push through। एंड ऑफ कोर्स खाना बहुत अच्छा बना है, आप और बाकी लोग एंजॉय करते हैं, एंड एंजॉय करने के बाद वो लोग चले जाते हैं, यू आर लेफ्ट टू क्लीन अप, एंड दैट might be the time when you start to wonder कि यार was this entire process worth it? इतनी मेहनत करके खाना बनाना, and then साफ करना, um, for that short period of just eating it, was it worth it? Now this process, this idea, does this sound familiar? That's what parenthood can feel like sometimes. आप पूरी प्लानिंग कर सकते हो, फाइनेंशियल, इमोशनल, फिजिकल, बट मे बी यू आर नॉट मोटिवेटेड इनफ, या कुछ भी हो सकता है, 100 रीजन हो सकते हैं कि मे बी इन द बिगिनिंग या हाफ वे थ्रू या एट द एंड यू रिग्रेट इट, एंड दैट डज नॉट मीन कि आपने यू आर नॉट डूइंग अ गुड जॉब। इट्स जस्ट a mix of pride, love, exhaustion and regret. A core example could be when you adopt pets. Now people love their pets, they love their pets to bits, not everybody, but
देयर आर मेनी गुड पीपल हु लव देयर पेट्स अ लॉट, पर कई बार इट कैन बी अ वेरी ओवरवेलमिंग फीलिंग, स्पेशली जब आपने शुरू शुरू में अडॉप्ट किया होता है। आपको रियलाइज होता है कि आपका पूरे प्लान्स एंड लाइफ हैज टू रिवॉल्व अराउंड योर पेट इन अ वे, कि आप बैग पैक करके अचानक से छुट्टी पे नहीं जा सकते हो या कई घंटों के वॉक पे नहीं जा सकते हो बिकॉज आपका पेट है घर पे। या तो आप उसको साथ में ले जाओ या फिर कुछ प्लान्स करो ताकि कोई आके उसका ध्यान दे। देन आपको उनकी हेल्थ का ध्यान देना होता है, उनके खाने का ध्यान देना होता है। अगर वो थोड़ा बीमार पड़ गए, इट्स वेरी हार्ड टू फिगर आउट कि उनको क्या हुआ है, बिकॉज ऑफ कोर्स दे कांट स्पीक एंड टेल यू। सो ऑफ कोर्स देयर आर द अपसाइड्स कि यू हैव अ कंपेनियन, बट उसके साथ साथ एक बहुत सारे कॉन्स भी होते हैं, बहुत मेहनत लगती है। एंड इट्स नॉट जस्ट वो यूट्यूब शॉर्ट्स जहाँ पे आप इंजॉय कर रहे हो, खेल रहे हो। इट इज अ लॉट ऑफ वर्क एंड दैट कैन बी वेरी टेरिफाइंग एंड ओवरवेलमिंग। सो ऑफन टाइम्स, एंड आप अगर बात भी करोगे कई पेट ओनर से, तो तुरंत एडॉप्शन के बाद एक पीरियड होता है व्हेन यू फील रिग्रेट कि यार मे बी इट वाज नॉट द राइट डिसीजन, मे बी वो जो मेरा केयर फ्री लाइफ एंड फ्रीडम था, आई हैव लॉस्ट दैट। डज दैट मीन कि वो अपने पेट्स को प्यार नहीं करते? नहीं, इट जस्ट मीन्स दे आर ह्यूमन। एंड सेम विद पेरेंटहुड, द सेम डील। यू माइट लव योर किड्स more than anyone, you might be the best parents, but you could still regret it. And why does it happen? Because kids, although they're amazing, they demand everything: your time, energy, finances, dreams, and even a part of your identity. Especially एक Indian woman के लिए, it's like being handed a rule book जहाँ पे बोला जा रहा है your life is all about sacrifice, forget your dreams, forget your independence, because motherhood is your sole purpose. एक अच्छी माँ बनना ही आपका जिंदगी का सोल पर्पस है, और अगर आप कुछ भी अपने लिए करते हो तो आप अच्छी माँ नहीं हो। एंड जब आप यू नो थोड़ा एम्प्टी होने लगते हो, आपके करियर, फ्रेंडशिप्स, इवन पर्सनल हॉबीज बैक सीट लेने लगती हैं, देन ऑफ कोर्स एक रिग्रेट की फीलिंग क्रीप इन कर सकती है। आप अपने आसपास पूरी दुनिया को आगे जाते हुए देख रहे हो, एंड यू माइट फील स्टक और स्टैग्नेटिंग इन वन पोजिशन। इट्स नॉट बिकॉज यू डोंट लव योर चाइल्ड, you love your child, but it's because you have lost a part of yourself. And then comes the guilt. आपको एक बार अगर थोड़ा रिग्रेट हुआ, उसके बाद वो गिल्ट आ जाता है कि हाउ कैन आई फील दिस वे, आई लव माई चाइल्ड, व्हाट काइंड ऑफ मदर एम आई। एंड लेट मी टेल यू दिस, इट्स ओके टू फील रिग्रेट विदाउट गिल्ट। Motherhood is very hard, it's relentless, both motherhood and fatherhood, in fact parenthood, but especially I think Indian context mein motherhood. And it's okay to acknowledge the challenges without diminishing the love you feel for your kids. So just because आप admit कर रहे हो कि okay fine, may there may be moments or times when you regret it, doesn't mean कि आप अपने बच्चे को प्यार नहीं करते हो या you're not a good parent. And it's very important to talk about this, because for every mother who feels regret, there's another mother out there who is silently blaming herself for not being perfect. सो अगर हम सब ओपनली बात करें इसके बारे में, एक सॉलिडारिटी आती है कि ओके, आई एम नॉट अलोन टू फील दिस, कि ये खुद में इतना ओवरवेलमिंग प्रोसेस है, इतना टायरिंग है कि देयर वुड बी मोमेंट्स और टाइम्स व्हेन यू रिग्रेट इट, एंड मे बी इट्स पॉसिबल कि वो रिग्रेट कभी ना जाए। बट एक बार अगर हम ओपनली बात करेंगे एंड वी नो कि अदर्स ऑल्सो फील द सेम वे, नॉट एवरीबडी बट मे बी सम पीपल डू, देन वो बहुत हेल्प करता है, एंड इट नॉर्मलाइजेस दीज फीलिंग्स इंस्टेड ऑफ बीइंग ashamed or feeling guilty about it. And also, let's not forget that Indian women often bear the additional burden of societal expectations. I mean, society तो वैसे भी, you know, इंडियन वुमेन पे बहुत हार्ड होती है कि भाई तुमने शादी, बच्चे, ये सब एक सीक्वेंस में करने हैं, एंड एक तरीके से जीना है, अपने पति देव और उनके फैमिली के अकॉर्डिंग जीना है। सो इट्स जस्ट नॉट एन इजी path for Indian women. But when men can complain about being tired from work or from, taking care of their kids or families, so why can't women talk about being tired from motherhood? It does not make you a bad parent. It makes you honest. So, what's the takeaway now? Pehli baat, stop judging yourself. Feeling regret does not mean you're not a good parent. It means you're doing your best in a tough situation. Second, अगर feelings बहुत overwhelming हो जाए, then seek help. A counselor, support group, a friend who understands, your family who understands. अपना safe space find कीजिए, भले ही वो online हो. I know it's easier said than done, but try, because you might need help.
And lastly, know that this too often passes. Usually it will not last for long, and there would be periods. Some days are hard, some days are beautiful, but all days are equally valid. So there's no shame in admitting it. And motherhood is not all sunshine and rainbows, and it's time we stop pretending it is. It's messy, it's beautiful, it's exhausting, and sometimes it comes with regret. And that's okay, it's okay. So let's normalize these conversations, because a world where mothers can talk honestly is a world where, उनको truly support किया जा रहा है. And not just, I mean, I often focus on mother and women, but it's also valid for men and fatherhood. And also really think it through before you have kids. Because अब बच्चे करो या ना करो, there will be a set of regrets involved. नहीं करोगे तो भी maybe society, and you might yourself question कि is this the right choice? Did I miss out on something? And करोगे तब भी there is a set of regrets involved. तो लाइफ में हर चीज के pros and cons होते हैं, and you have to make peace with certain things. And with that, I would say, let me know your thoughts. Have you felt this way? If you have, you're not alone. We are here to listen. And let me know in comments if you want to talk about something else. And thank you for tuning in. Bye.